Namaste. Let us generate the output. For that, let us open one of the nested job files. Now here, do not click on the big button. Click the escape key on your keyboard. तो आप अपने कीबोर्ड पर escape की दबाइए. अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपको न्यू जॉब क्रिएट करने के लिए बोलेगा. लेकिन हमें नया जॉब क्रिएट नहीं करना है, हमें पुरानी जॉब फाइल खोलनी है. सो आई विल प्रेस द escape key. Escape. Now it is showing me the nested layouts prepared earlier. I will open this file with two nested jobs, two nested layouts. I'll make it big. I'll change the color scheme. I'll make it bigger. And now, कुछ आउटपुट मुझे यहीं पे मिल जाएंगे. I will click the right mouse button. I will click on the summary. यहाँ पर मुझे नीचे यूटिलाइजेशन मिल रहा है. X और Y एक्सिस में कितनी लेंथ मैंने नेस्ट की है वो बताया जाएगा. पार्ट्स का वेट, रॉ मटेरियल का वेट वहां पर राइट साइड टॉप पे दिखाई देगा. टूल साइज क्लियरेंस यहां पर मिलेगा. स्टॉक पे क्लिक करोगे तो थिकनेस और डायमेंशंस मिलेंगे रॉ मटेरियल के. कट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कटिंग लेंथ मिलेगी और बाकी सब डेटा लीड इन लीड आउट साइकिल्स टूल पाथ्स वगैरह मिल जाएगा. अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू. You will be able to see the printed result details. But please understand the printout may not be the same for each customer. The layouts may be customized for certain users. This is a customized report. Actual report can be slightly different or even somewhat significantly different if you have chosen a different package. तो ये आपके रिपोर्ट्स हो गए ऑन स्क्रीन और पेपर पे. बट नाउ आई वांट टू जनरेट द रिजल्ट. So this planning file can contain multiple layouts, but I want to generate results one by one for each sheet. So मुझे इसमें से दो लेआउट है, दोनों को आइसोलेट करके सेपरेट फाइल में सेव करना होगा. And then I have to generate codes for them. This process of isolating a layout from a job file containing multiple sheets is called shortlisting. I am shortlisting this file. It will be taken out along with parts and sheet from this job. It will be saved in a folder with appropriate name. And I will do the same with the next one as well. I will shortlist this also. इसको भी shortlist करता हूँ. उसको 12 नंबर की फाइल में सेव किया गया है. Now this job is empty. I want to close this. Lekin I am not closing the software. I am closing only this job file. That is because the software can read only one job file at a time. So I am closing this window but not the software. Let me open. Let me open this file. Tomorrow. This is the file I had shortlisted. And now when I confirm it, the results will be generated automatically in appropriate folders. Let me confirm. Now please remember, if you confirm a job, if you confirm a layout, you cannot modify it later. So it will tell you to check all the errors and then ask you for a password, which I am typing. This is a big password. Please understand these questions can be different for different post processors. The password itself could be shorter, in which case different questions would be asked to you. जैसा पासवर्ड और जैसा लाइसेंस आपका बना है उसके हिसाब से आगे का क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वो प्रोसेस डिसाइड होता है. ये जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपको पूछा जाए. कुछ कस्टमर्स को ये सवाल ना भी पूछा जाए, ये बन सकता है. Well, the software will save the result, that is CNC code, and report in appropriate folders. Let us check them. पहले कोड चेक करते हैं. ये वाला आपका कोड है जो अभी अभी बनाया गया है. फाइल नंबर 12. This will contain CNC codes, and what kind of codes it contains depends on the processor file which I had described much earlier in one of the first few videos. दूसरा, let us see the reports.
यहां आपका एक एनालिसिस फाइल अपडेट हुआ है. दिस इज ऑल्सो अपडेटेड ऑटोमेटिकली विथ layout number 12. This is that layout. Two parts were nested, as you can see. दोनों का क्वांटिटी वेट वगैरह लिखा गया है. नेम ऑफ द शीट इज मेंशन्ड हियर, साइज ऑफ द शीट इज मेंशन्ड हियर. सो एट द एंड ऑफ October month, for example, this is a running month, October 2021. For the at the end of the month, you don't have to compile these details. These details are automatically compiled and kept ready for you for the entire month. And this folder, you will be able to see the DXF file of the nested layout, which you can see, which you can store, and which you can share with third-party fabricators and other departments if necessary. So, to conclude, when you want to generate results, you have to shortlist the layout and take it out of the current planning file, which may contain many layouts. आपकी प्लानिंग फाइल में बहुत सारे लेआउट्स हो सकते हैं. उसमें से लेआउट्स को वन बाय वन आपको बाहर लेना है. उस प्रोसेस को शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं. जब एक लेआउट को आपने शॉर्ट लिस्ट करके दूसरे फाइल में सेव कर दिया, तो लेटर ऑन यू कैन ओपन इट and confirm it using a password that would be given to you. अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग पोस्ट प्रोसेसर के लिए अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट the output would be saved in a certain folder, and generally that folder is this. The name of the folder would be different for different users. That would be communicated to you in your licensing email. Thank you very much for your time. Thank you.